Hey everyone, my name is Amit and you're watching Aptitude 360.online. This is video number 10 of time, speed and distance, and in this very important video, we are going to be discussing what is circular motion and how do we simplify these problems जहां पे circular track पे दो runners या तो same direction पे भाग रहे हों या तो opposite direction पे भाग रहे हो, and then you have to find out when they are going to be meeting anywhere on the track or at the starting point. So क्या theory होनी चाहिए, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी एजेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. And then in the next video, we will be solving some better problems based on our understanding in this video. So let us get started and try to understand this. So when two runners run in the same direction, that is what I'm going to be focusing upon first. तो जब दो runners same direction पे run करेंगे और problem कुछ ऐसा आ गया, on a circular track of 420 meters, two runners Amit and Rohit are running in the same direction. Problem is when do they meet for the first time at the starting point. ये मैंने क्या बोला, पहला problem तो यही होगा. So the key word out here is they are running in the same direction. Do you understand this? And the other key point is they need to be meeting each other at the starting point. सर्कुलर ट्रैक पे कहीं और नहीं, बट जहां से शुरू किया था उनको वहीं पे मिलना है. Now, what should be our approach? Understand this. If this is the circular track, understand, this is the circular track and the circumference of this track is given to you as 420 meters is the circumference. Now we have got runner A. Runner A is running in this direction, say with 7 meters per second, whereas runner B is running with a speed of 4 meters per second, not A and B, whereas Amit and Rohit. Now, understand this thing. Let us first find out what is going to be this number of seconds when Amit and Rohit individually will be reaching at the starting point. पहले तो ये पता कर लेते हैं भाई, आपने यहां से शुरू किया इस starting point से और आपको वापस starting point पे मिलना है. So Amit is going to be taking how many seconds? So distance is equal to speed into time. यही हुआ ना. So what is going to be time, which is 420 upon 7, 60 seconds. So in 60 seconds, Amit will again be at the starting point. So 60 seconds and then 60 seconds and then 60 seconds. So after every second, 60 seconds, Amit is going to be at the starting point. Do you understand this? And how about Rohit? Rohit, in order to travel this 420 meters at the rate of 4 meters per second, the time is going to be 420 upon 4, which is 105 seconds. So after every 105 seconds, Rohit is going to be at the starting point. यही है ना. आपको क्या निकालना है, आपको तो ये पता करना है कि भाई ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आ जाएं. तो एलसीएम कॉन्सेप्ट, एलसीएम वाली वीडियोस में आपने ये सीखा हुआ है. यहां पे अमित एंड रोहित, आफ्टर एवरी 60 seconds Amit is going to be at the starting point. This is guarantee, right? So after 120 seconds also, and then 180 seconds, and then 240 seconds, and then 300 seconds, so forth and so on, Amit is assuringly going to be at the starting point, whereas for Rohit it is 105 seconds. After 105, 210 and 305 and then 420. So what is that we are doing? Don't you think that we will have to find out a number which is in the table of 60 and 105 both, isn't it? So what does that mean? We will have to find out the LCM of 60 and 105. So what is that you should be doing? You should be finding out LCM of 60 and 105. And if you do so, and I'm assuming that you have seen my 7 videos on LCM and HCF and you know how to find it out. So 15 will be out, and then you have got 4 and 7 and 4 and 7. So you will have to find out LCM of 4 and 7, which is nothing but 28, because both of these two are co-prime to each other. So this is 28 and this one comes out as 420 seconds. तो ये देखो ना, यहाँ पे 420 तो है. अब आप इसमें 300 के बाद जाते हैं आगे 360,
360 के बाद में क्या आता है, ये 420. So what does that mean? After 420 seconds, it is guaranteed that Amit and Rohit, both of them are at the starting point. अब ये भी तो हो सकता है कि भाई रोहित ने पहला राउंड लगाया एंड दूसरा लगाया एंड तीसरा लगाया एंड चौथा लगाया, फोर्थ राउंड रोहित का, whereas first and then second and then third and fourth and fifth and sixth and seventh. अमित अपने 7th राउंड पे जब पहुंचेगा, whereas जब रोहित 4th राउंड लगाएगा, after 420 seconds of the starting point, they assuringly are going to be at the starting point together, isn't it? Now, if you understand this thing कि भाई 420 सेकंड के बाद में तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे ही होंगे. अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पहली बार मिलने के बाद वो दूसरी बार कब आएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो वो वही हो जाएगा 420 के. टेबल में आप देखना शुरू कर दोगे. दिस इज गोइंग टू बी 840. आफ्टर 840 सेकेंड्स Amit and Rohit will be at the starting point together, and then in the table of 420, so this is going to be what, 1260 and then 1680, so forth and so on. So what is that you are learning? आप तो ये निकाल दो 2 स्टेप्स में अमित को कितना समय लगा सर्कुलर ट्रैक को कवर करने में, अद इनिशियल पोजीशन पहुंचने में, एंड रोहित को इंडिविजुअली कितना लगा, एंड आप क्या करिए उन दोनों टाइम का एलसीएम निकाल दीजिए एंड यू विल फाइंड आउट एट व्हाट टाइम दीज टू इंडिविजुअल्स आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर. प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड हो गया. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, what do we have to do? We have to find out in the same problem, when on the circular track of 420 meters, 2 runners Amit and Rohit are running in the same direction, on the same direction. When do they meet for the first time at anywhere on the track? अब मैं ये क्या कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप उनको स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलाएं, कहीं भी मिल सकते हैं वो, anywhere on the track. And if that is the situation, so this is 420 meters. Now you have got Amit. Speed of Amit is 7 meters per second, whereas speed of Rohit is 4 meters per second. Now they started simultaneously. Let us assume that at this point, and in 1 second what is going to happen? Amit will be running 7 meters, whereas Rohit is going to be running only 4 meters. So what is going to be the gap between them after 1 second? 3 meters. You understand this? 2 सेकंड के बाद में गैप कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. And then after 3 seconds the gap is going to be 9 seconds. And then don't you think that the gap is going to be increasing between them, right? और anywhere on the track अगर आपको मिलाना है तो don't you think that Amit will have to run a total of 420 meters, which is the circumference, 420 meters more than Rohit to meet him anywhere on the track. ये मैंने इसको लिखा इसलिए so that you understand what is that I am trying to say. Anywhere on the track. Anywhere on the track. Where की spelling अजीब सी है, देख लेना आप. So when I said that after 1 second the gap is going to be 3 meters, after 2 seconds the gap is going to be 6 meters, after 3 seconds the gap is going to be 9 meters and then 12 meters. और अगर उनके बीच में जो गैप है वो पूरा का पूरा एक सर्कमफरेंस हो जाए, पूरा का पूरा एक सर्कल हो जाए, तो they are going to be at the right point, they are going to be together. I'm so sorry, they are going to be together. Now so we will have to find out what is the relative speed, isn't it? Because both of them are moving in the same direction. So relative speed is going to be 7 minus 4, which is 3 meters per second. 3 meters per second. And what's the total distance that Amit will have to run more than Rohit? It is 420 meters. That is one circumference, right? So what is going to be the time? What is going to be the time? So time is going to be distance upon speed, and this is 420 upon 3, and if you simplify this, it is coming out as 140 seconds. So as per our calculation, Amit and Rohit will be meeting for the very first time anywhere on the track after 140 seconds.
when they are meeting at the initial position together for 20 seconds. The previous problem. Now what is this problem? Anywhere on the track when they are meeting for the first time, it is going to be 140 seconds. So let us find out कि 140 seconds में अमित कितना ट्रैवल करेंगे and रोहित कितना ट्रैवल करेगा. अमित and रोहित. So Amit is going to run 140 speed into time, right? So this is going to be what? 980 meters. And how about Rohit? Rohit in 140 seconds at the speed of 4 meters per second. This is going to be what? 560 meters. And what did I say? अमित अगर रोहित से एक सर्कमफ्रेंस, इन दिस केस इट इज 420 मीटर्स, ज्यादा चला जाए तो दोनों एक दूसरे को मिल जाएगा. सो दिस माइनस दिस, लेट अस फाइंड इट आउट. आरंट यू गेटिंग दिस इज एज 420 मीटर्स? आरंट यू गेटिंग दिस एज 420 मीटर्स? इसका मतलब क्या हुआ कि 140 सेकंड के बाद में अमित और रोहित के बीच का जो गैप है वो एग्जैक्टली 420 मीटर्स हुआ. इसका मतलब दे आर अगेन टुगेदर. डज दिस मेक सेंस टू यू? सो व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट व्हेन दे आर गोइंग टू बी टुगेदर एनीवेयर ऑन द ट्रैक, आप क्या कर दो, इसी सर्कमफ्रेंस को, डिस्टेंस इज गोइंग टू बी सर्कमफ्रेंस, आप रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दो एंड यू विल बी हैविंग द टाइम. सो इसका मतलब क्या है कि वो 140 सेकंड के बाद भी मिलेंगे, तो 280 के बाद में भी मिलेंगे, एंड देन 420 के बाद में भी मिलेंगे, एंड देन 560 के बाद भी मिलेंगे. बट इसमें जो ये 420 है, दिस इज गोइंग टू बी एट द इनिशियल पोजीशन. भाई सर्कल पे कहीं पे भी मिलेगा, ट्रैक पे कहीं पे भी मिले, ये वाला इनिशियल पोजीशन, दूसरा वाला भी नहीं होगा. बट तीसरा वाला जो है वो क्या है? इनिशियल पोजीशन है. यानी बाय द टाइम दे आर गोइंग टू बी मीटिंग ईच अदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो 2 बार पहले मिल चुके हैं एक दूसरे से, यही वरना तीसरी बार मिल रहा है. और वो तीसरी बार कहां पे हो रहा है? जहां से उन्होंने रेस को शुरू किया था. चलो जी, आप कंफ्यूज होने की, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसको स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे. अब आपसे प्रॉब्लम क्या पूछ लिया गया? ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 420 meters, the problem is simple. They're running in the same direction. How many times do they meet each other till they reach at the starting point together? How many times do they meet each other? मैंने आपको क्या बोला? प्रॉब्लम आपका सिंप्लीफाइड हो गया. भाई अगर आप 140 सेकंड के बाद मिलते हो, एंड देन 280 के बाद मिलते हो, एंड देन 420 के बाद मिलते हो, और 420 इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ सेकंड जहां पे वो इनिशियल पोजीशन पे मिलेंगे, तो पहली बार हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया. मैं कह रहा हूं कि इतनी कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझने की यहां पे कोशिश करिए. सो व्हेन दे आर गोइंग टू बी मीटिंग ईच अदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि उन्होंने, अगर आप अपने आप को एक रनर मान के चलो, आप दौड़ रहे हो, 2 रनर्स दौड़ रहे हैं, and when they are going to be meeting each other at the starting point, जो travel time है, number of seconds है, that is going to be same, absolutely same, क्योंकि दोनों तो सेम समय के लिए ही ट्रैवल कर रहे हैं, यानी रन कर रहे हैं. सो इसका मतलब क्या हो गया? when time is constant, can we say this? When time is constant, be very patient, see if you can understand this thing. When time is constant, इसका मतलब क्या होगा? Distance is equal to speed into time. और अगर time हो गया constant, so distance is going to be proportional to speed. जितना speed ज्यादा होगा उतना ही distance traveled ज्यादा होगा, isn't it? And अमित and रोहित के जो speed का जो ratio है, that is 7:4, right? इसका मतलब क्या हो गया कि अमित, by the time अमित and Rohit, they are meeting at the initial position together. अमित लगाएगा 7 rounds, अमित लगाएगा 7 rounds, whereas रोहित लगाएगा 4 round. क्या ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? जिस रेशियो में उनका स्पीड है, उसी रेशियो में उनका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा, प्रोवाइडेड जो टाइम है दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. सो if Amit is running 7 rounds whereas Rohit is running only 4 rounds, तो Amit is taking 3 rounds more than that of Rohit in the given period of time. अमित भाई रोहित से 3 राउंड ज्यादा ही तो गया ना. 7 राउंड्स अमित ने लगा दिया, 4 राउंड्स रोहित ने लगा दिया, तो अमित ने रोहित से कितना राउंड ज्यादा लगा दिया? 3 राउंड्स. और जितनी बार ज्यादा लगाए उतनी बार तो मिला वो. और यही चीज आपने इस प्रीवियस वाले स्लाइड पे सीखा हुआ था. वो क्या था वहां पे? देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, and then this is going to be
360 and then 360 and then 420. So 7 times, 1 2 3 4 5 6 and then 7. By the time Amit is taking 7 rounds, Rohit is taking only 4 rounds. So how many times they are going to be meeting each other? They are going to be meeting each other exactly 3 times. सिंपल है प्रॉब्लम, ये समझ में आ रहा है आपको? तो आप क्या करते, अगर आपको प्रॉब्लम सच में सिंप्लीफाई ही करना था तो मैं तो यही बोलता कि भाई ये 7:4 का रेशियो है उनके स्पीड का, और क्योंकि वो सेम ट्रैवल टाइम कर रहे, सेम टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये जो इन भाई साहब का 7 राउंड्स बराबर इनके इन भाई साहब के 4 राउंड्स, तो पहला वाले ने दूसरे वाले से 3 राउंड ज्यादा लगाया, तो कितनी बार मिलेंगे? वो 3 बार मिलेंगे, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी आपको. ओके देन, how many times are they in the same problem? How many times they are diametrically opposite to each other before they meet each other at the starting point? They are meeting 3 times in the process. If they are meeting 3 times, तो 3 ही बार तो diametrically opposite भी होंगे ना भाई. Can you understand this thing? What did I say? When they are going to be meeting each other 3 times, by the time they reach together at the initial position for the very first time, 3 बार मिला तो 3 बार प्रोसेस में डायमेट्रिकली ऑपोजिट भी तो होंगे. ये आंसर आ गया, 3 काम हो गया, खत्म आपका, है सिंपल सी बात. सो when 2 runners are running in the same direction, then if you want them to meet at the starting point, for the very first time, this is going to be LCM of A and B. And what is A and B? A is the time taken by the first runner to cover the length of the track, whereas B is the time taken by second runner to cover the length of the track. So for the very first time, they will be meeting at the LCM of these 2 individual times. And if you want them to meet anywhere on the track for the very first time, so this is going to be length of the track, whereas relative speed is, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन पे घूम रहे हैं, तो जो स्पीड ज्यादा है उसमें से कम वाली स्पीड को सब्सट्रैक्ट कर दो एंड उससे किसको डिवाइड कर दो? आप जो सर्कमफ्रेंस है, लेंथ ऑफ द ट्रैक है, उससे डिवाइड कर दो. यू विल बी हैविंग योर आंसर. प्रॉब्लम इज सिंप्लीफाइड. सो व्हेन दे आर मीटिंग, व्हेन दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड व्हेन दे आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया. And when they are meeting anywhere on the track, ये confusion आपका दूर हो गया. Does this make sense to you? Now, when 2 runners run in the opposite direction, same direction का तो हमने confusion दूर कर लिया. Now, on a circular track of 420 meters, 2 runners, Amit 7 meters per second, whereas Rohit 3 meters per second, are running in the same direction. यहाँ पे मैंने रोहित वाली स्पीड को क्या कर दिया? चेंज कर दिया. When do they meet for the first time anywhere on the track? Now, this is the track. Length of the track we know is 420 meters, right? And Amit and Rohit, both of them are moving in the opposite direction. So Amit says moving in this direction and Rohit is moving in this direction. Speed of Amit is given to you as 7 meters per second, whereas speed of Rohit is given to you as 3 meters per second. And don't you think that since they are moving in the opposite directions, what is going to be the relative speed? I have made 2 videos for you on the relative speed. Video number 8 and video number 9. We have discussed thoroughly about this concept. So this is going to be what? 7 plus 3, 10. एक और क्या कहने की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? इन 1 सेकेंड द गैप बिटवीन अमित एंड रोहित इज गोइंग टू बी 10 मीटर्स. बाई 7 मीटर्स रोहित भाग के गया, सर्कमफ्रेंस पे 3 मीटर्स रोहित भाग के गया. सो ऑन द सर्कुलर ट्रैक द गैप बिटवीन देम इज गोइंग टू बी 10 meters in 1 second. In 2 seconds it is going to be how much? 20 meters. In 3 seconds it is going to be 30 meters and so forth and so on. And you want them to meet anywhere on the track. Understand this. अगर उनके बीच का गैप हर एक सेकंड में 10-10 मीटर होता जा रहा है, और अगर उनके बीच का जो गैप है इस समय वो कितना 420 है, अगर उसी रेट से अगर वो एक दूसरे को मिल जाए तो हमारा काम चल जाए. सो व्हाट इज दैट मीन? सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम.
collectively they will have to travel 420 meters. And what is the relative speed? So t is going to be 420 by 10, which is 42 seconds. So what does that mean? This means that after 42 seconds, necessarily Amit and Rohit are going to meet each other. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? पहले ये देख लेते हैं कि 42 सेकंड्स में हो क्या रहा है. Amit in 42 seconds, so 42 into 7, 294 meters चल के जाएगा. Whereas Rohit in 42 seconds at the speed of 3 meters per second 126 meters चल के जाएगा. अगर इन दोनों का जो एडिशन है, if it comes out as 420, तो फिर तो काम खत्म हो गया. इसका मतलब 4, this is, if you see, that is coming out as 420 meters. So what does that mean? By the time they are going to meet each other, Amit will have traveled 294 meters, whereas Rohit will have traveled 126 meters. यहां से अमित चल के आएगा 294, कहीं यहां पे आधे से ज्यादा. ऑब्वियसली अमित की स्पीड ज्यादा है तो वो ज्यादा ट्रैवल करेगा. और रोहित भाई साहब यहां चल के आएंगे, तो अमित चल के आएगा 294 मीटर्स, वेरएज रोहित यहां से यहां चल के जाएगा 126 मीटर्स, एंड दे विल बी मीटिंग ईच अदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एनीवेयर ऑन द ट्रैक. आपको करना क्या था? अगर आपने रिलेटिव मोशन समझ के रखा था, आपको तो सिंपल यही करना चाहिए था. आपको लेना चाहिए था सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय देयर रिलेटिव स्पीड. What is their circumference? 420. What is their relative speed? 7 plus 3, which is 10. How many seconds later they are going to be meeting each other for the first time anywhere on the track? It is 42 seconds. Does this make sense to you? और अगर वो 42 सेकंड पे मिलते हैं, अगर वो 42 सेकंड पे मिलते हैं, तो इसका ये भी तो मतलब होगा दे आर गोइंग टू बी मीटिंग ईच अदर आफ्टर एवरी 42 सेकंड. सो दे विल बी मीटिंग एट 42 सेकंड, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी 84, एंड देन 126, and then 168, and then 210, and then 252, and so forth and so on. They will keep meeting. So after every 42 seconds they are going to be meeting each other anywhere ऑन द ट्रैक. अब इसमें इन टाइम में कोई एक ऐसा भी हो सकता है जो होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट वाला होगा. अगर प्रॉब्लम बोल दे दे विल हैव टू मीट ईच अदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, देन वी विल हैव टू थिंक ऑफ फ्रेश. बट आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग as to how we should be dealing with this problem when it says that when do they meet for the first time anywhere on the track. It has to be nothing but circumference divided by relative speed. Simple. Now when they are running in the opposite direction, the problem is when do they meet each other for the first time at the starting point. So the circumference is 420. Do you understand this? And speed of Amit we have taken as 7 meters per second, whereas speed of Rohit we have taken as 3 meters per second. And since they will have to be meeting each other at the starting point, तो पहले ये पता कर लेते हैं कि अमित एंड रोहित ये दोनों इंडिविजुअली स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब पहुंचेंगे, isn't it? So if you need to find out in how many seconds Amit is going to be reaching at the starting point for the very first time, 420 is the circumference, and what is the speed? 7 meters per second. So if you have to find out time, it is going to be nothing but distance upon speed, and if you simplify this, it is going to be 60 seconds. So Amit is going to be at the starting point after 60 seconds, whereas Rohit is going to be at the starting point for the very first time. आप यहाँ पे क्या करोगे, इसी 420 को किससे डिवाइड कर दोगे, बिकॉज सर्कमफ्रेंस तो पूरा ट्रेवल करना पड़ेगा उसको भी. So it is going to be 3. So that one comes out as 140 seconds. Do you understand this? So Amit and Rohit
are going to be taking 60 seconds and 140 seconds respectively to reach at the starting point individually. अब अमित 60 पे भी जाएगा, फिर 120 पे भी जाएगा, फिर 180 पे भी जाएगा, वही कहानी जो हमने अभी करी थी. So 300 and then 360 and then 420, whereas Rohit is going to be 140 and then 280 and then 420 seconds. So after 420 seconds, Amit and Rohit, they both are at the starting point together. ये बात आपको समझ में आई. So आपको इस पे क्या करना चाहिए था? You will have to find out what is going to be LCM of time taken by these individuals to reach at the starting point. वो आप निकाल दोगे, आपका काम खत्म हो जाएगा. Now the problem now it says is how many times do they meet each other till they reach at the starting point? How many times they are going to be meeting? Understand this. They are meeting each other for the very first time after 42 seconds. And what did I say? 84 seconds. And then so forth and so on. And they are going to be at the starting point at 420 seconds. Does this make sense? So 420 तक जाने में, don't you think this is going to be nothing but 420 upon 42? They are going to be meeting each other how many times? 10 times. The meeting at the 10th time is going to be meeting at the starting point for the very first time. भाई 10वीं बार की जो मीटिंग है वो होगी इनिशियल पोजीशन पे पहली बार की मीटिंग. So by the time they are going to be meeting each other for the very first time at the initial position, वो 10वीं मीटिंग होगी उनकी, because they are meeting after every 42 seconds. Now you have understood why they are meeting after every 42 seconds, isn't it? So the answer of this problem is going to be 10 times. So what is the theory? What is the theory? When these two runners are running in the opposite direction, and you will have to find out when runners will have to meet each other for the first time when they travel. So एक तो ये अंडरस्टैंडिंग कि भाई एंटायर सर्कमफ्रेंस एक साथ में उनको ट्रेवल करना पड़ेगा, एंड व्हेन दे विल हैव टू बी मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑलवेज फॉर द फर्स्ट टाइम, then you will have to take LCM of A and B, A being time taken by the first runner to cover the track, whereas B is time taken by the second runner to cover the track. And when you want them to meet anywhere on the track, मैंने बोला प्रॉब्लम के थ्रू आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी. It has to be length of the track divided by relative speed. That's it. इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है. So in this video we have covered two very important aspects. When two runners are running on a circular track, point number one, they're running in the same direction. Point number two, they're running in the opposite directions. When they're running in the same direction, then how they are going to be meeting each other at the starting point? आपको क्या करना है? LCM लेना है दोनों के इंडिविजुअल टाइम्स का. When they are going to be meeting each other anywhere on the track, it has to be circumference divided by relative speed. Simple. And when they are going to be meeting each other when they are moving in opposite direction, आपने ये दोनों केस देख लिया. इससे ज्यादा आपको इन 4 पॉइंट से ज्यादा आपको जानने की कुछ भी जरूरत नहीं है. So in the next video I am going to be simplifying some problems, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया? हमने तो अभी तक सिर्फ theory part किया हुआ है. So I am going to be simplifying 5-6 problems in the next video, which is going to be video number 11 of time, speed and distance. That's it. So thank you very much for watching this one. I'm going to see you in the next. Till then, bye bye and take care, and thank you very much for watching this one.